हेलो बच्चों, लाइट के कितने ही वीडियोस आपने देखे होंगे मेरे, राइट? यू मस्ट हैव सीन वीडियोस अबाउट इंट्रोडक्शन टू लाइट, मिरर, लेंसेस, बट टुडे वी आर गोइंग टू रीड ह्यूमन आई। अब आप सोच रहे होंगे ह्यूमन आई और लाइट? जी हाँ, ये बायोलॉजी का पार्ट, दैट इज पार्ट ऑफ योर बॉडी, ह्यूमन एनाटॉमी वर्क्स with the help of light. So it is very important that we understand the functioning of human eye. So let's study this. This is the structure of how your eye looks like. और एक बात, 8th के बच्चे, 7th के बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम आई को क्या पूरे आई को पढ़ रहे हैं? Are we reading the whole eye? No. When we talk about eye, we are talking about the black circular region in your eye, right? And this is the side view of the same, right? तो इसमें आप देखेंगे your eye, I'll just give out the composition of it and then gradually we will describe them one by one. The outer layer, let me take a highlighter for you to let you understand that. This outer covering is known as cornea. It is a thin transparent layer through which the light enters the eye. This allows maximum light to go inside the eye, right? After the eye has reached the cornea, it will enter inside and reach a liquid, a semi-liquid jelly-like substance called the aqueous humor. अब आप सोच रहे होंगे कॉर्निया तो ठीक है, ये एक्वस ह्यूमर का क्या काम है? Aqueous humor is there between the cornea and the rest of the eye to ensure that the eye is protected from the air pressure as well and of course to give it the shape. और एक बात, आप सोच रहे हैं लाइट का कॉन्सेप्ट इसमें कैसे एप्लीकेबल है? तो लाइट, जहाँ पर लाइट वहाँ पर फिजिक्स, राइट? सो लाइट जब एंटर करता है कॉर्निया से ज़रा सा रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हैपन्स और थोड़ा सा रिफ्रैक्शन एक्वस ह्यूमर, द जेली लाइक सब्सटेंस की वजह से भी होता है। ये देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है दैट द वाइट पोर्शन ऑफ योर आई, द वाइट पोर्शन ऑफ योर आई इज नोन एज द स्केलेरा, राइट? इट इज टफ so that it can protect the interior of the eye from accidents, right? So you have sclera which is protecting the interior of the eye, right? Now cornea, as I told you, cornea is a transparent covering. आपको आंखों की झिल्ली जिसे हम कहते हैं, right? It is a transparent covering present on the outer side of the eye, right? And it is allowing the eye to enable all the light to go inside, right? So this is cornea, right? The outer transparent layer. Then comes the iris, right? आप अगर ध्यान से देखेंगे किसी की आंखों में तो ब्लैक पोर्शन के अंदर एक छोटा सा और ब्लैक पोर्शन नजर आएगा, right? That black portion, the inner black circle, is actually a inner door or a inner window for allowing the light inside and is known as pupil. ठीक है? तो अंदर कॉर्निया से लाइट जब अंदर आ जाती है तो वो प्यूपिल के थ्रू अंदर जाती है आंखों के। ये प्यूपिल क्या है? प्यूपिल एक इनर, अंदर का छोटा सा सर्कुलर रीजन है जहाँ से लाइट अंदर जा सकती है। लेकिन आपने कभी आई टेस्ट कराया होगा तो डॉक्टर मस्ट हैव सेड यू, राइट, कि लेट्स डायलेट योर आई बिफोर वी डू अ आई चेकअप। डायलेशन का मतलब क्या है? प्यूपिल को बड़ा करना, राइट? तो आपकी आंखों को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्यूपिल को बड़ा करना होता है या छोटा करना होता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता। इसके लिए प्यूपिल को मदद लगती है आइरिस की, राइट? और आइरिस आपकी आंखों को कलर भी प्रोवाइड करता है, राइट? अगर हम किसी की भूरी आंखों की बात करते हैं, ब्लू ग्रीन आईज ऑफ सम पर्सन, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आइरिस. सो आइरिस गिव्स कलर टू द आई. Also, iris ensures that pupil can be dilated or can be reduced in size to allow the amount of light that is coming inside the eye. Now, aqueous humor. As I told you, it is a jelly-like substance.
inside the cornea, between the cornea and the pupil. This helps us give shape, this helps us protect from the pressure and ensures that the eye does not collapse, right? Now we have the lens. This is where the concept of light is more important. Lens. We have a lens just right behind the pupil. This is the lens that we are talking about. Right? लेंस बिहाइंड द प्यूपिल जिस पर लाइट गिरती है और ये लाइट सीधे अंदर आके रेटिना पर फॉल करती है. रेटिना इज नथिंग बट द स्क्रीन विद इन आवर आई, राइट? सो लेंस इज लाइक अ sphere of liquid present inside the eye. It's a crystalline lens, right? And it converges the light to fall on the retina, which is the screen, right? But eye lens अपनी जगह पर कैसे रहती है? It is held in its position with the help of ciliary muscles, right? The muscles that are associated with the lens are known as ciliary muscles. Now understand, आप ऐसा नहीं कह सकते अरे दूर की चीज़ आ रही है मुझे अपना लेंस बदलने दो, अरे पास की चीज़ देखनी है मुझे अपने आँखों के लेंस बदलने दो. That is not possible, right? तो आपके आँखों के लेंस खुद ब खुद इलोंगेट और शॉर्टन होते हैं ताकि लाइट कहीं से भी आ रही हो आपके रेटिना पर आके गिरे, राइट? और इसीलिए वी हैव सिलरी मसल्स दैट इज गोइंग टू इलोंगेट द लेंस एंड शॉर्टन द लेंस एज वेल. In old age, the ciliary muscles may not be as functional and thus more increased problem in the human eye, right? Now let's talk about the retina. Retina is like the screen. आप फिल्म थिएटर जाते हैं वहाँ पर स्क्रीन होती है 70 mm की. आपके आँखों में भी एक स्क्रीन होती है क्योंकि इमेज जो फॉर्म होता है वो रियल इमेज होता है, राइट? सो ये स्क्रीन कैसी है? इस स्क्रीन में बहुत सारे सेल्स हैं. दिस इज द रेटिना दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. Very carefully layered in the inner part of the eye, right? Retina has many cells on it. Many cells, जिसमें से दो cells आपको जानना ज़रूरी है. The rods and the cones, right? मैं आपके उम्र में कैसे याद रखती थी? Cones, C for cones, C for color. So cones are responsible for you getting to see the colorful light, a colorful world, right? You get to see the different colors like blue, green, yellow, red. All that is because of cones, because they are sensitive to bright light and can sense color of the object, right? But what are rods? Rods वो सेल हैं जो आपको रात में, नाइट विजन में या अंधेरे में देखने में हेल्प करते हैं, right? So yes, if you would have noticed an owl has a lot of rod cells in its retina. Vitreous chamber or vitreous humor. This is the part which is the vitreous chamber or the vitreous humor. यहाँ पर भी जैसे aqueous humor एक fluid jelly like substance है, ये पूरा region vitreous humor से भरा हुआ है. इसका क्या काम है? This is necessarily giving the shape, the bulge shape that the eye has, and also helps us retain and protect the eye that way, right? So vitreous humor पूरे entire mid region में भरा हुआ है so that the eye stays protected, the eye keeps its shape as it is, and we have a bulge shape accordingly, right? So the inner space of the eyeball, called the transparent vitreous chamber, consists of gel-like substance called the vitreous humor. It maintains the right pressure. Now always understand, aqueous humor and vitreous humor both are responsible for maintaining the right pressure for the eye and also the structure of the eye. Now if we come to a spot on the retina which is called the blind spot. Matlab, as the name says, if light falls on the blind spot, you will not get an image, you will not be able to see things, right? It is at the junction of the retina and the optic nerves. ये देखिए, optic nerves are where the nerves from the eye goes towards the brain carrying the signal, and that is how the brain will realize अरे बुआ जी आ रही हैं, है ना? And all that visions that you get is all because of the optic nerves. So where the retina meets the optic nerves, that's the blind spot.
where you will have no vision. You will not be able to form a image, right? So it is called the blind spot. It is the spot where there are no sensory cells. यहाँ पर कोई सेंसरी सेल्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर नर्व्स का जंक्शन है, राइट? देन देयर आर ऑप्टिक नर्व्स. Optic nerves. See, very beautifully in human anatomy, nerves from various regions have been named differently. Optic nerves are nerves that connect the eye to the brain. So they are the one which take the signal. And most importantly, आपको मैंने बोला कि रेटिना पे रियल इमेज फॉर्म होता है. रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होता है. So, क्या हमें लोग उल्टे नजर आते हैं? बिल्कुल नहीं. The brain corrects it for us, right? So with the help of brain, we are always able to see things upright. That's all in human eye, children. I hope you understood how beautiful this small organ of the human body is. If you have understood the function of human eye, please do like and subscribe our channel. Thank you, children.